Hello everyone, welcome back to the enigmatic girl. My name is Purva and I hope you guys are doing well. So हर बार की तरह इस बार भी I'm back with another video and this is going to be really great and a special thing क्योंकि it is related to something facials and everyday routine. So since I am like too young for super big facials also, तो घर पे ही अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए आई डू एट होम फेशियल विद इन मिनट्स एंड इट इज़ अ गुड थिंग. सो नाउ आई एम गोइंग आउट फॉर अ फंक्शन एंड आई स्टिल हैव 2 to 3 hours लेफ्ट विद मी. तो आई थॉट कि क्यों ना मैं अपना फेशियल आपके साथ शेयर करूँ एंड वी विल डू इट ऑल टुगेदर. सो फॉर दिस आई विल बी टेकिंग this papaya kit from Nature's Essence, plain wet wipes or tissue, you can take anything, and applicator ताकि अपना आप you can apply your things. So we'll start with this. तो इस तरह से ये kit है which costs you rupees 260 and it has in total 4 steps with 1 pre-tan removal step. तो फटाफट से लेट्स चेक ऑन टू द स्टेप एंड आई विल डू इट ऑल टुगेदर विद यू ताकि आप भी देख सको एंड यू कैन ऑल्सो चेक. सो इट सेज कि आपको पार्लर लाइक ग्लो घर पे मिल सकता है विच आई हैव ऑलरेडी ट्राइड. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. यू कैन इवन चेक माई प्रीवियस वीडियो, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ये ऑन स्क्रीन. बट सिंस आई एम गोइंग आउट नाउ टुडे तो मैंने सोचा दोबारा कर लेते हैं बिकॉज फेशियल इज़ अ गुड थिंग राइट. तो फर्स्ट स्टेप वुड बी अ प्री टैन रिमूवल थिंग. It would be a wipe off mask and this after that wipe off mask we have to do cleanser, scrubbing, massage and a face pack. So let's head into and let's check on the products. तो as I told you कि मैंने ये already use किया हुआ है, so this would be the thing. इसमें आपको clearly 5 bottles दिख जाएंगी छोटी छोटी सी with every even numbers भी लिखा है 1 2 3 4 and this is totally clear. So the first step would be a pre-tan removal. गाइस मेक श्योर कि आप इसे अपने फिंगर्स से भी कर सकते हो अप्लाई, बट आई यूज दिस स्पैचुला. इससे इवन आउट एप्लीकेशन होती है एंड इट इज़ सो इजी, सो कन्वीनियंट. सो पहले अपने बाल पीछे करते हुए आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद दिस थिंग क्योंकि आई एज आई टोल्ड यू कि मैंने अभी जाना है तो आई डोंट हैव टाइम कि बाल ख़राब करूँ. सो आई क्विकली सी व्हाट आई डू. यू कैन even I have washed it, sanitized it, it's all clean. ये मेरा personal है. But before you do, just you can take a small quantity. You can apply it over here, okay, and you can just even it out using this spatula. You can clearly see कितना easily और बढ़िया ये हो चुका है. This is a pre-tan mask और आपको इसे 15 minutes रखना है as they have said. तो मैं फटाफट ऐसे 15 मिनट्स रखती हूँ एंड आई विल बी बैक. फिर इसे वाइप करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. आई विल बी बैक. सो आई हैव रिमूव्ड दैट टैन पैक. यू कैन क्लियरली सी मैंने 15 मिनट्स रखा था एंड अभी भी मेरा फेस थोड़ा सा मॉइस्ट है बिकॉज आई हैव वॉश्ड इट बाय मिस्टेक. आपको जस्ट इसे टिश्यू पेपर से क्लीन करना है. इट इज़ ऑल डन. इट इज़ अ वाइप ऑफ मास्क और आपको कुछ नहीं करना. And now we are heading towards our first official step, that is cleanser. This is number 1 and it is clearly written cleanser. तो cleanser की consistency देखते हैं पहले. तो it would be somewhat like this. You can clearly see creamy है थोड़ा. I'll just go and quickly apply it and we are good to go. तो cleanser आप अपने हाथ से भी यूज़ कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू मसाज इट इवनली फॉर 5 minutes एज दिस सेड. और एंड नाउ यू आर जस्ट गुड टू गो. आई एम जस्ट मसाजिंग इट इन माई फेस एंड आई हैव टू डू इट फॉर 5 minutes. तो मिलते हैं 5 मिनट बाद व्हेन आई रिमूव इट. हेड आउट. आई एम बैक विथ माई क्लीन फेस. मुझे लाइक मैंने काफ़ी देर से फेस वॉश नहीं किया था एंड आई एम बैक अगेन. सो वी आर गोइंग टू आवर सेकेंड स्टेप विच इज़ एक्सफोलिएशन विच इंक्लूड्स अ स्क्रब. तो scrubbing I do it on a very regular basis and this is a gel scrub guys. You just can clearly see this is a gel orange gel scrub.
So I'll quickly apply it on my face if it's clearly visible. I do feel so you just have to apply it evenly. और आप इसे अपने हाथों से भी स्क्रब कर सकते हो, or else you can use this side. It has this bristles. You can use this side for scrubbing. मैं usually अपना face wash, face scrub सब इसी से ही करती हूँ because I really like this process. So they say that I have to do all this. अगर कुछ quantity left है आपके हाथ पे, so you can just use it. The best part of this is you can easily scrub, और इसमें bristles है जो आपके deeply आपके pores clean करेंगे. So I'll just quickly go and clean this. First I'll have to do this for a while, and जब आपको लगे कि it's all clean, you're just good to go. And don't forget आपकी nose and this sides of your nose, because this is the area जहाँ पे dust accumulations होती ही हैं सबको. So just take hold of this and I'll be back in a while. Quickly. I'm back again. मैं I'm back कितनी बार बोल चुकी इस वीडियो में, इवन मुझे भी याद नहीं है. तो I have just scrubbed my face and अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, विच इज़ अ मसाज क्रीम. द स्टेप 3 डिफाइंस नरिश. तो नरिशमेंट में हमें मसाज करनी है अपने फेस पे फॉर अ वाइल, एंड आई विल जस्ट क्विकली ओपन दिस फॉर यू. तो मेक श्योर आप हर स्टेप के बाद अपने हैंड्स भी क्लीन करो, बिकॉज लाइक आई एम सिंस डूइंग दिस. तो आपको भी यही करना है. यू हैव टू अप्लाई एंड यू हैव टू जस्ट मसाज इट. So let's do this. Let's just do this together. The cream is very thick. Consistency wise बहुत अच्छी है. You can see मैंने बहुत थोड़ा amount लिया था. Near about a pea size amount I have taken, and it is very good in texture. So I'll just massage it and let's see कि how does it work. आपको इसे अच्छे से अपनी स्किन में absorb होने तक मसाज करना ही पड़ेगा ताकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे से आपको दिखें. एंड yeah, that's it for now. I'll just wait and hold on. I'll be back in a while. और उसके बाद let's move to the final step, which is a face mask. And तो मसाज करने के बाद I can clearly see a visible glow on my skin, especially यहाँ जहाँ मेरी थोड़ी puffiness थी eyes में. I can clearly see an improvement of this. तो I'm on to my fourth step, which is polish, which includes a face pack. तो आपको क्या करना है, you just have to apply this face pack all over your face and you're just good to go. फेस पैक की पहले हम कंसिस्टेंसी देख लेते हैं. इट्स लाइक रियली थिक. अब एप्लीकेशन के लिए यू कैन अगेन यूज योर हैंड्स और द ब्रश दैट आई हैड. मैंने इस ब्रश को भी अगेन वॉश किया हुआ है. आफ्टर एवरी स्टेप आई एम वॉशिंग दिस. तो आई विल ट्राई इट यूजिंग माई हैंड्स. आई हैव टू इंश्योर दैट इवनली लगे. अगर आप हाथ से इवनली लगा सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड. Or else you can use a brush or face pack brushes, anything you want, you can clearly use. So I'll just quickly apply this face pack, and the main concern here is कि आपको इसे evenly apply करना है and you have to skip it for a while. और अब मैं बिल्कुल final touch होके आऊँगी. Just wait for a while. So I am finally back with all the things, and you can clearly see a glow in my face. At least I can easily see. I just applied a lipstick and nothing else. No makeup, just nothing. This is pure bare skin, and yeah. So I am really impressed with my look now. And if you see me before, you can easily tell the difference कि कितना फ़र्क आया है स्किन में. So I would really say, and trust me guys, जो quantity और consistency products की हैं सारी ट्यूब्स की, it is so very good. आप ये सब 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हो. And I'm going for now, so just head into the description and check everything. And
बाय टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट आप उनकी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन सब चेक करो बिकॉज यू विल फाइंड क्वांटिटी कंसिस्टेंसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एंड विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. सो आई वुड रियली रिकमेंड यू ट्राई दिस थिंग. प्लस इस ब्रांड की काफ़ी सारी किट्स हैं इंक्लूडिंग गोल्ड डायमंड, scrubbing, papaya, everything. They have 5 to 6 different types of kits, so you should check this out. And if you have your mothers or grandmothers जिनकी स्किन एजिंग या सच इश्यूज हैं तो आप उनके लिए भी स्किन टाइटनिंग किट्स यूज़ कर सकते हो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. So just head on to the brand and if you want a closer look of my face तो you can still see कितना अच्छा एक impact आया यहाँ. So I would really recommend you try this and you're good to go. So I'm going for now. Bye, take care, and don't forget to like, share, subscribe, and comment in the description. And do check the description as well. So bye, take care.